Let us first consider what is the definition of a child. According to CRC, children are defined as those who are below the age of 18 years. What is childhood? It is recognized in the Universal Declaration of Human Rights as a period entitled to special care and assistance. In response to the growing concern in most countries of Europe and North America for the protection of children following the First World War, the newly formed League of Nations established a Committee on Child Welfare in 1919. The private agencies also felt the need to provide broad social standards for the protection of children. Of particular importance was Save the Children International Union. Inspired largely by the work of Egalitine Jebb, who had founded Save the Children in response to her own experience with child victims of war. Now, what did Save the Children International Union do? In 1923, it adopted as its charter a 5-point declaration which described the basic condition of society and it should meet in order to provide adequate protection and care for its children. The next year, the Union persuaded the League of Nations to adopt the same declaration. In 1924, League of Nations adopted the Declaration of the Rights of the Child, which came to be known as the Declaration of Geneva. Recognizing that mankind owes to the child the best that it has to give, the simple principles of the declaration establish the basis of child rights in terms of both protection of the weak and vulnerable and promotion of the child's development. The declaration also made it clear that the care and protection of children was no longer the exclusive responsibility of either the family or the community or even the individual country. The whole world as a whole had a legitimate interest in the welfare of the children. Declaration of Geneva had the following points. The first being, children must be given the means needed for its normal development both materially and spiritually. The second, hungry children should be fed, sick child should be helped, erring child should be reclaimed and the orphan and the homeless child should be sheltered. Child must first to receive relief in times of distress. Repeat, child must be the first to receive relief in times of distress. Declaration of Geneva, if we continue, also states that children must be in a position to earn a livelihood and must be protected against every form of exploitation. Child must be brought up in the consciousness and its best qualities are to be used in the service of its fellow men. So, child rights and how it has been taken up by the world community as a whole. In 1945, the United Nations organization, that was earlier the League of Nations, became United Nations organization in 1945. In 1946, the Economic and Social Council of the United Nations recommended that the Geneva Declaration be reaffirmed as a sign of commitment to the cause of children. The Universal Declaration of Human Rights was adopted by the United Nations General Assembly in 1948. The United Nations General Assembly adopted Declaration of Rights of the Child in 20th November 1959, which was expansion of Geneva Declaration from 5 principles to 10 basic principles. The International Covenant on Civil and Political Rights was adopted by the General Assembly in 1966. It also upholds the rights of the child. In 1989, world leaders decided that children needed a special convention just for them because people under 18 years old often needed special care and protection that adults do not. The leaders also wanted to make sure that the world recognized that children have human rights too. The Convention on the Rights of the Child, CRC, you must remember we have defined child by the definition of CRC at the beginning of the slide, is the first legally binding international instrument to incorporate the full range of human rights, civil, cultural, economic, political and social rights together.
The convention sets out these rights in 54 articles. It spells out the basic human rights that children everywhere have: the right to survival, to develop to the fullest, to protection from harmful influences, abuse and exploitation, and to participate fully in family, cultural and social life. The four core principles of the convention are: the first being non-discrimination, second, devotion to the best interest of the child, the right to life, survival and development, respect for the views of the child. The convention also protects children's rights by setting standards in healthcare, education, legal, civil and social services. Three UN international instruments in the child justice fields are: the first, the UN Standard Minimum Rules 1985, also known as the Beijing Rule. The second, the UN Guidelines for the Protection of Juvenile Delinquency, the Riyadh Guidelines adopted in 1990. The third, UN Standard for Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty, the JDL or Havana Rules adopted in 1990. Now we shall talk about RTE. RTE, as you know, is right to education. A significant effort in this direction is the provision for children to free and compulsory education. This came into force from 1st April 2010. From that day, elementary education became a fundamental right. If we talk of the background for RTE, it is Article 21A, which inserted in fundamental rights as per 86th Constitutional Amendment. The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine was stated. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 came through this. The RTE Act requires the state to provide free and compulsory education to all children in the age group of 6 to 14 years and to prepare curriculum inconsistent with constitutional values. It aims at quality education by setting norms to schools and providing quality teachers. The Act attempts at social reformation and protection of the child. It also removes the operation of examination and provides statutory role for the civil society. The Act has clearly stated the responsibility of governments, local bodies, schools, teachers, parents and the community as a whole. Now, other points that we would like to characterize right to education as: the right of children we must discuss under this, to free and compulsory admission, attendance and completion of elementary education. Free, no child liable to pay any fee or expense preventing her from pursuing and completing elementary education. Compulsion, on the state parental duty to send the children to school. Non-enrolled / dropout children be admitted to age appropriate class. No child shall be failed or expelled up to class 8. Bars corporal punishment and any kind of mental harassment. What does RT speak of the teachers? RT says that qualification for appointment of teachers to be laid down by academic authority authorized by the central government. Academic responsibilities of teachers should be laid down, prohibits deployment of teachers for non-education purpose except for decennial census, disaster relief, elections to parliament, state legislatures and local bodies. Thus, you see that it is only in these 3 acts that the teachers can be used out of school. The rest of the time the teacher must devote himself to the school, himself or herself to the school and to quality education. Now, what should be the standard of the schools? The first we must talk about is norms and standards specified for all schools. Infrastructure and related facilities. That the school should provide ample infrastructure to the student so that he or she may be able to pursue their education. There should be an appropriate people-teacher ratio in each of the school.
The number of school days and working hours for the teachers should be specifically mentioned. Community participation in schools ensured through SMC comprising elected representative teachers and parents. All aided schools to provide free education to at least 25% of the children. Special category of schools and unaided schools to admit in class 1 at least 25% of the children belonging to weaker section and disadvantaged group from the neighborhood of the school and provide free and compulsory elementary education to these children. There should be no capitation fees, no screening for admission and no school without recognition. Now, what should the curriculum be like? The curriculum must conform to constitutional values. That is, a curriculum should be value oriented. It should make the child free from fear, trauma and anxiety. Be child centered, child friendly, provide for children through activities. That is, the way of instruction should be learner centered and the strategies for instruction should be child friendly. Medium of instruction. It is the right of every child to get their first education in their mother tongue. So, the child's mother tongue is to be the medium of instruction as far as possible. Provide for comprehensive and continuous evaluation, and there should be no board examination till completion of elementary education. Now, how does this lead to the protection of the rights of the children? There is decentralized grievance redressal mechanism. There is NCPCR and SCPCR assigned additional functions to first, examine and review safeguards for rights under this Act and recommend measures for effective implementation. Inquire into complaints relating to child's right to free and compulsory education. Powers are assigned under section 14 and 24 of the Commission for Protecting of Child Rights Act. When State Council for Protection of Child Rights was not constituted, appropriate government may constitute an authority. In overview, we may say a detailed study of the provisions of the Act makes one understand that there is a very close relationship between RTE Act and the rights of the child. The RTE Act provides for equity, special training for the needy, a learner-centered approach to education, individualized education plan and abolition of any kind of corporal punishment or any mental harassment to the children. All these are linked to the right of education of the child. It is the responsibility of all Indians to see that the children of school going age are in the school. Get quality education without physical punishment or mental harassment and complete elementary education which is free and compulsory. At the end of this session, we may say that the right to education and the UN initiatives are very closely related because right to education is a fundamental right that has been bestowed to all children all over the world. Thus, right to education as an act of 2009 that started in 2010 broadens and strengthens the UN initiative for the rights of the children. Thank you. क्या आप जानते हैं एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपकी उम्मीदों को नई ऊंचाई। क्या आप जानते हैं एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपको घर बैठे जब चाहे तब एडमिशन की सुविधा,
क्या आप जानते हैं एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो आपको दे तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका? अगर आप नहीं जानते तो NIOS, NIOS, NIOS। जी हाँ, NIOS मात्र एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपके जीवन को उज्जवल भविष्य और सुगम राह। 25 लाख शिक्षार्थियों ने किया भरोसा इस शिक्षा संस्थान पर और किए आगे बढ़ने के मजबूत इरादे। जो देगा आपको घर बैठे शिक्षण सामग्री के साथ रेडियो व टेलीविजन कार्यक्रमों का सहयोग। अरे वाह, ऐसा सुनहरा अवसर और कहाँ। अब होगा सबका सपना साकार। यकीन नहीं होता अब शिक्षित होना होगा इतना आसान। पच्चीस साल का लंबा सफर और लाखों लोगों के चेहरों पर खिलती मुस्कान, गर्व और गरिमा से जीने की प्रेरणा देती मुस्कान, आत्मसम्मान और विश्वास से पैदा हुई मुस्कान। इन खिलते चेहरों पर ये मुस्कान आई है शिक्षा के जरिए। ये मुस्कान आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के जरिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बढ़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है। वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है, हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ। NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है।
NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रेबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमयजोत सिंह। NIOS सीमा पर खड़े उन प्रहरियों को भी शिक्षा से लाभान्वित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। सच तो ये है कि NIOS की पहुंच हर ओर रहती है, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी हो या जेल की कोठरी में बंद कैदी या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब निवासी। देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का यही मिशन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गांव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बच्चियों को, वहाँ के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुँचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है। ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं। अब हम उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। NIOS अपने छात्रों को माध्यमिक स्तर पर 26 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 19 विषयों का विकल्प देता है। पढ़ाई किस माध्यम से करनी है, इसमें भी आपको लचीलापन मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर ही 7 भाषाओं के अलग अलग माध्यमों का विकल्प मौजूद है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा 86 वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कामकाजी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए NIOS ने ITDC, सिस्को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की है। आज लाखों छात्रों के लिए अपनी पसंद का स्कूल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। निरंतर विकास और नवीनीकरण के लिए NIOS सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा का उद्देश्य महज रोजगार जुटाना ही नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना भी है। NIOS लाखों छात्रों के लिए यही आत्मसम्मान दिलाने में जुटा है। लाखों लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा सबके लिए, कहीं भी, कभी भी। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। सीमा से विद्यालय जो मोह
कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, क्या आप जानते हैं एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपकी उम्मीदों को नई ऊंचाई? क्या आप जानते हैं एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपको घर बैठे जब चाहे तब एडमिशन की सुविधा? क्या आप जानते हैं एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो आपको दे तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका? अगर आप नहीं जानते तो NIOS, NIOS, NIOS। जी हाँ, NIOS मात्र एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपके जीवन को उज्जवल भविष्य और सुगम राह। 25 लाख शिक्षार्थियों ने किया भरोसा इस शिक्षा संस्थान पर और किए आगे बढ़ने के मजबूत इरादे। जो देगा आपको घर बैठे शिक्षण सामग्री के साथ रेडियो व टेलीविजन कार्यक्रमों का सहयोग। अरे वाह, ऐसा सुनहरा अवसर और कहाँ। अब होगा सबका सपना साकार। यकीन नहीं होता अब शिक्षित होना होगा इतना आसान।